Namo Nama friends. In the present video, we are going to learn Kriyapad means verbs. So whatever action we do every day, there is a particular word for each action and those words for actions are called Kriyapad. हम जो क्रियाएं करते हैं वो सारी क्रियाओं के लिए हमारे पास एक एक शब्द है, तो वो शब्द को हम क्रियापद कहते हैं. Let us start. Here you can see one boy. What is the boy doing? He is running. What we will call it? संस्कृत में हम उसे क्या कहेंगे? बालकः धावति. बालकः, a boy is running. Now we can see a boy who is going to the school. बालकः विद्यालय गच्छति. बालकः विद्यालय, विद्यालय मीन्स स्कूल, गच्छति जा रहा है. बालक स्कूल पे जा रहा है, विद्यालय. So here there are two क्रियापद, धावति and गच्छति. You can see a little boy is sleeping. So here the action is sleeping. कौन सी क्रिया हो रही है? सोने की क्रिया हो रही है. We can say in Sanskrit, बालः निद्राम करोति. बालः निद्राम करोति, बच्चा सो रहा है. Oh, this boy, look at him. He is eating something. हम उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? खाने की क्रिया हो रही है. खाने की क्रिया को कैसे बताएंगे? छात्रः अन्नम खादति. खादति, eating. The boy is eating food. छात्रः अन्नम खादति. Oh, we can see that this boy has waken up at 6:10. Early morning है, 6 बज गए हैं ऑलरेडी और ये बच्चा सो के उठा है. कौन सी क्रिया हुई यहाँ पे? सो के जागने की क्रिया हुई. सुबह हुई है, बच्चा सो के उठा है. बालकः प्रातः उत्तिष्ठति. उत्तिष्ठति मीन्स उठना, जागना, नींद से जागना. रोज सुबह हम जब नींद से जागते हैं उसके बाद क्या करते हैं? वी क्लीन आवर टीथ. So what is the action we can see here? Cleaning the teeth. दांतों को साफ करने की क्रिया हो रही है. उसे हम संस्कृत में कहेंगे बालकः दंत धावनम करोति. दंत, teeth, धावनम to clean. बालकः दंत धावनम करोति. A boy is cleaning teeth. Here we can see this boy is drinking water. The action is drinking here. क्रिया कौन सी हो रही है? पानी पीने की. हम उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? बालकः जलम पीबति. जलम water, पीबति drinking. A boy is drinking water. बालकः जलम पीबति. A boy is having shower और नहा रहा है, मतलब नहाने की क्रिया हो रही है जिसे हम संस्कृत में बोलेंगे बालकः स्नानम करोति. स्नानम bathing और taking bath. बालकः स्नानम करोति. Someone is bowing down to the God. भगवान को नमन कर रहे हैं. कौन सी क्रिया हुई यहाँ पे? नमन करने की.
हम उसको संस्कृत में बोलेंगे भक्तः देवम नमति। भक्तः, जो भगवान की भक्ति करता है हम उससे भक्त कहते हैं। हम भी भक्त ही है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। सो हियर a bhakt is bowing down or praying to the god, which we can call in Sanskrit as bhaktah devam namati. Now here we can see a girl. What is the girl doing? Chhatrah likhati. Chhatrah yani student. This girl is a student, and what she is doing? What is the action she is doing here? She is writing something. So it is called Chhatrah likhati. Kids are playing. Chhatraha kridanti. Kridanti means playing. Shikshakah pathyati. A teacher is teaching. Pathyati means teaching. We can see a teacher here and she is teaching to these kids. तो पढ़ाने की क्रिया हो रही है जिसे हम संस्कृत में कहेंगे शिक्षकः पाठयति. Oh, this little boy is crying. बालः रोदनं करोति. Balah rodanam. Rodanam means crying. Oh, she is trying to listen. What is she trying to listen? क्रिया क्या हो रही है? सुनने की. बालिका शृणोति. बालह और बालकः मतलब बॉय. And balika means girl. Balika शृणोति. A girl is listening. This boy is sincerely, happily reading a book. The action is reading of a book. Chhatrah pathati. Pathati means reading. Chhatrah pathati. Oh, this cute boy seems happy and laughing. हंसने की क्रिया हो रही है. बालकः हसति. What is this girl doing? She is sitting, right? बैठने की क्रिया हो रही है. She is sitting. बालिका उपविशति. उपविशति means sitting. And this boy is standing. बालकः तिष्ठति. तिष्ठति means standing. उपविशति means sitting. This boy is watching television. बालकः दूरदर्शनम पश्यति. दूरदर्शनम मीन्स टेलीविजन. और कौन सी एक्शन हो रही है? क्रिया कौन सी हो रही है? देखने की. टेलीविजन को देखने की क्रिया हो रही है. देखना. पश्य. पश्यति मीन्स देखना. बालकः दूरदर्शनम पश्यति. अ बॉय इज वॉचिंग टेलीविजन. Two friends are talking here, right? Balika mitram vadati. This girl is talking to her friend. Mitram, friend. Vadati, talk. She's talking, right? Balika mitram vadati. The girl is talking to her friend. Somebody is giving a disc. रमेशः सांद्रस्थालिकां स्वीकरोति. This person is giving and this person is receiving. So we can say कि ये रमेश का हाथ है जो we can say कि ये रमेश का हाथ है जो ये डिस्क एक्सेप्ट कर रहा है. एक्सेप्ट करना यानी स्वीकरोति. और सांद्रस्थालिका का मतलब है डिस्क. सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क. उसको हम बोलेंगे संस्कृत में सांद्रस्थालिकाम. रमेशः सांद्रस्थालिकाम स्वीकरोति. एक्सेप्ट करना, किसी से लेना. Here somebody is taking
Accepting, here somebody is giving. धनिकः धनम ददाति. ददाति मतलब देना. धनम धन पैसा या कुछ भी. So dhanikah, somebody who is rich or having money, is giving dhanam matlab money to these poor men. Dadati means giving. Here it is accepting, here giving. This boy is cycling. Balakah dvichakrikam chalayati. Dvichakrikam means cycle. चालयति चलाना, चला रहा है. ये बच्चा साइकिल चला रहा है. बालकः द्विचक्रिकां चालयति. Oh, this girl is dancing. It seems like a Indian dance form. महिला नृत्यति. नृत्यति means dancing. This boy is singing. Balakah gayati. Gayati means singing. Oh, somebody is chopping vegetables. Pachakah shakam kartayati. Pachakah matlab the one who is cooking. Shakam vegetable. Kartayati cut kar raha hai. Somebody is cutting. The cook is cutting the vegetables. उसको हम संस्कृत में बोलेंगे पाचकः शाकम कर्तयति. यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, राइट? उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? कृषिकः सस्यम वपति. कृषिकः किसान, फार्मर, सस्यम पौधा, वपति लगा रहा है, प्लांटेशन हो रहा है. कृषिकः सस्यम वपति. A bird is flying. Khagah means bird. Uddiyati, flying. Khagah uddiyati. A bird is flying. So friends, we have learned so many action verbs here, and all the verbs are in present form. See you in the next video with another form of the action verb. Till then, happy learning. Dhanyavadah.